वाइड बॉल। Oh my goodness! What is happening here? What is happening? Was this really a wicket? तीन चेंडू। And यहां पर एक विकेट गिरता हुआ आणि अशा प्रकारे टन्स ओनली कैप्टन्स सैंडविच काउंटर में जाइए, कैच वॉरियर्स जीतती है। तो अपना टॉप 2 के स्पॉट पर आने का बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए। और विनंती आहे की आपला पॉइंट्स टेबल कॅप्टन्स आपण येऊन पॉइंट टेबल आणि सामना करतील रश्मी मॅम। रश्मी आणि दीप्ती ओपनिंगचे बॅट्समन। चालू असलेला सामना। बॉल आणि रश्मी मॅम ह्या पहिल्या चेंडूवरती हे बोल्ड झालेले आहेत। पहिल्या चेंडूवरती देवाचे आभार मानताना बबिता मॅम, बारीक बारीक गोष्टी आम्ही इथे बसल्या बसल्या टिपत असतो, त्याचप्रमाणे कुठेतरी डिटो हे यांच्या चेहऱ्यावरती स्माइल, ह्या सगळ्या विकेट पडल्यानंतरच्या लोकांच्या आलेले हे बदल आहेत। चला पुन्हा एकदा चला वैयक्तिक असा पहिला षटकातला हा दुसरा चेंडू सामना करतील। अगली गेंद उठाकर खेल दिया और यहां पर बैक टू बैक विकेट्स फॉर परवीन जी। बैक टू बैक विकेट सेंड्स बैक शिवी। पहले रश्मि जी को आउट किया, फिर शिवी जी को। नाउ यार शी इज ऑन द वर्ज फॉर टेकिंग अ हैट्रिक। डू वी हैव एनी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट? बीसीसी कन्नड़ बख्शीस बैठेल। तृप्ति मैम, जर परवीन जी ने हैट्रिक लिया तो, आणि इकडे मैं 2-3 लैंग्वेज को एकत्र करते हुए, कदमों का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए, बहुत ही बढ़िया बॉल यहां पर। अगर एलबीडब्ल्यू होता तो ये प्लम एलबीडब्ल्यू किया जाता और वैसे परवीन जी हैट्रिक ले चुके होते, लेकिन अफसोस यहां पर एलबीडब्ल्यू नहीं है। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। आपको पता इसके पहले भी उन्होंने एक मेडन ओवर डाला था जिसको 250 रुपीज का प्राइस अभी भी देना बाकी है। आपने भी डाला है, राइट? ओ बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल। ऑल लेग अंपायर का इशारा इज नॉट आउट। पंच ते बॉल पुढे पकडतात, कलेक्ट करतात। लक्ष द्या, कीपर स्पेशली कीपर पुढे बॉल कलेक्ट करतात। तृप्ति मैम वंस अगेन। और यहां पर एक अवसर हो सकता था, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक दैट्स अ मेडन ओवर। ओवर
आई थिंक प्रवीण जी को और एक बॉल डालना था शायद. मेडन ओवर निकालते हुए बहुत ही बढ़िया. आई थिंक विद दिस मेडन ओवर Steelers versus Giants. Midway come for a toss. Next match. League का last match. So this is the second maiden over for Praveen ji. We'll wait and see if there is any kind of announcement. If yes, we will announce it. जायंट्स और स्टीलर्स. अब नहीं होगा. हमारे खिलाफ है तो नहीं होगा. And there you go, the new bowler Priyanka ji, and facing her will be Snehal ji. और पहले गेंद कोसाचा उंडा फटका, प्रहार. परंतु झेल बाद झाले आहेत दीप्तिमानना पुढे सिरीज मध्ये काही सूर गवसला नाही आणि 1 आणि 2 रनच्या वरती यांच्या विकेट्स गेलेल्या आहेत. आतापर्यंतच्या डेटा प्रमाणे आतापर्यंतची धावसंख्या 0 आहे. 0वरती या सगळ्या महिला आतापर्यंत ऑल आउट झाल्या आहेत. म्हणजे तुमच्या 18 चेंडूचा तुम्हाला संधी होती, परंतु तो त्या 18 चेंडूमध्ये तुम्ही एकही धावा करू नाही शकलात. हा एक मोठा गेम असू शकतो, कारण की याच्यानंतरच्या 18 चेंडूमध्ये तुम्हाला खरोखरच तुमची ही परीक्षा असेल की तुम्ही धावांचा पाऊस किती पाडता, हे त्याच्यावर डिपेंड करतं. Well, once again we are able to see this kind of an environment. Interesting. Santosh. He will bring the responsibilities of bowling for the next over. And I think the openers for men have come in the middle because the women have been clean bowled. So we need to know the batsman name, please. Manish and non-striker Amol. Thank you. Manish and Amol and our own Andya Bhai. 3 षटकाच्या नंतर धावसंख्या आहे. Win is a must for both the team. Jinka. In the progress in the final, you have to win this match. ऍक्च्युअली फॉर पॉइंट टेबल. Leg side में. लेगच्या दिशेने टोलला चेंडू, ही 1 धाव पूर्ण. अँडी उर्फ अनंत. अमोल. लेगच्या दिशेनेचा चेंडू, लेग स्टंपवरचा हा चेंडू, एक यॉर्कर नाही म्हणता येणार पण लेग टाइमचा चेंडू आणि एक डॉट बॉल. चालू करायचं केदार दादा, 1 मिनिट द्या. पॉइंट टेबल साठी, स्कोरबोर्ड साठी काहीतरी टेक्निकल इश्यू आहे. तोपर्यंत एक छोटीशी अनाउन्समेंट आहे. राज यांनी थोड्याच वेळाआधी असं सांगितलंय की त्यांनी चुकून कोणाच्या तरी नकळत त्याच्या पॉकेटमध्ये कॉईन टाकलाय. तो कॉईन कोणाच्याकडे असेल त्यांनी इथे या त्याच्यासाठी प्राइस ठेवलेला आहे. तुमच्या पॉकेटमध्ये चुकून तुमच्या नकळत कॉईन टाकलेला आहे, तो लकी कोण गाय आहे त्यांनी इकडे या, कॉईन घेऊन आणि प्राइस घेऊन जा. तुमचं प्राइस इथेच ठेवलेलं आहे. तर लकी पर्सनचं प्राइस इथेच ठेवलेलं आहे. जस्ट एक सरप्राईज गिफ्ट आहे. ते नकळत तुमच्या पॉकेटमध्ये कॉईन टाकला गेला आहे. बताओ डेट्स बताओ, मैं बताता हूँ. मैं क्योंकि ना जून एंड में बाहर रहेगा, मेरा लैंडिंग देखना पड़ेगा फुर्सत चलेगा. मैं इवनिंग रहेगा तो मैं आता हूँ. ठीक है, मैं करता हूँ कुछ तो. यहां पर देखना होगा क्या होता है.
And we are in for the next over. Aniket is almost ready for the next delivery, but we're just waiting for some time in the middle, citing some delays. कृपया मॅच बॉलने खेळू नका प्लीज. मैच बॉल ने नको खेला, मैच बॉक्स नहीं खेला. Interesting cricket tournament organized by Victory Cricket Club. In the ending stages of the tournament, we need to see who will be the winner of this game, and then we have to see how many more games are left after this game for the league matches, and then we will ultimately move into the finals. The top two will lock horns for the finals. No semi-final. उत्कृष्ट गोलंदाजी आनंद यांच्या मार्फत. और यहाँ पर बहुत ही अच्छा बॉलिंग आनंद भाई. अगली गेंद straight on the long on region. He can't get more than a single. A good shot attempted by Amol. Manish, the man on strike. किती बॉल झाले कौस्तुभ किती बॉल झाले 4 गेंदों पर 2 रन. यहां पर टैप कर दिया है लेग साइड पर. 1 रन के लिए. नॉट मोर देन 1 रन. अनंत यांच्या षटकातला शेवटचा चेंडू. Straight down the ground in the mid-on region for a single. उत्कृष्ट असा फटका, परंतु एक धाव घेण्यामध्ये यशस्वी झाले आहेत अमोल. सो बॉयजच्या रूल प्रमाणे 1+1. तो ये टूर्नामेंट में लास्ट बॉल में हर एक ओवर के मेंस में ऑन एन एवरेज 1 रन मिला है. 1+1 2 रन. ऐसा बहुत कम हुआ है कि 6+6 गया है और विकेट भी गिरा है नो डाउट, बट मोस्टली 1+1 आता ही है. विकेट के डर से और -5 के डर से कोई हिट नहीं करना चाहता. अनलेस एंड अंटिल इट इज अ वाटर अबाउट नोस लेवल सिचुएशन. राइट, बिल्कुल राइट. जैसे योद्धास ने खेला था, एक गेंद पर 6 रन चाहिए, 6 रन मार दिए उन्होंने. और यहां पर जैसे देखते हैं शुभम चौहान बॉलिंग का दारोमदारी करते हुए, यहां पर पहले ही गेंद पर उन्हें सफलता मिलती हुई रनआउट के दौर पर. और यहां पर deep discussions in the middle over certain rule related aspect. We'll get to know more about it in some time.
21 at the end of 1 over. 21. Giants win the toss, choose to bat. Giants have won the toss. And they have elected to bat first. पहली बार हमने ऐसा कप्तान को देखा जो बैटिंग करके जो टॉस जीतकर बैटिंग करने वाले हैं. Bowler. Dipti Surve. Dipti Surve is the bowler. And Babita is the batsman. And let's see what's in store. What's coming up next? The very first ball. Full toss. And it's a no ball call by the leg umpire. Because the ball has landed directly behind the stumps. So it's a no ball. 8 runs more to win. Here it's a wide ball. The match is slowly, steadily and surely going out of the hands of Warriors, and I think the body language of Warriors says it all. The shoulder levels have been dropped down. This time Babita ji spanks it. Oh my goodness. एंड जैसे हम देख रहे थे, नोट कर रहे हैं, बबीता जी क्या फैंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस दिया है. पावर प्ले ओवर में 3 बाउंड्री मारकर शी रियली ब्रोक द बैक ऑफ द वॉरियर्स. एंड this time it's been played well, hit well, and Shivji takes a very good catch, sends back Priyanka. So Priyanka जिन्होंने एक 6 मारा था लास्ट ओवर पर, शी इज आउट. Parveen is the woman on strike who took 2 maiden overs today, and this time dances down the track, but Rashmi Singh at the long on fence. What a brilliant fielding by her. Takes a running catch forward, coming couple of yards inside and taking that catch. Mind-blowing effort, and sends back Parveen. Wow. At the dying moments of this game, we are seeing some kind of brilliance by Warriors. It's little too late. Some late redemption from the Warriors really won't help their cause much. Tripti, the new batswoman, comes in the middle, facing Dipti for the first time in this match. And that's a good matchup here we are able to see. Just have to see till what time will they hold it. That's a catch dropped. A catch is dropped. Oh, it's a no ball call by the leg umpire. क्यों नो बॉल दिया? Oh, disturbance to the batswoman, so it's a no ball. Well, that's a good decision. And this time on the leg side, plays respectfully for a single. Well, a kind of a virtual semi-final clash is this kind of thing. We really wanted Warriors to win to see them proceed for the next round, but I think now that seemed to be a distant dream. And this time on the leg side in the gap for a single. 4 रनों की आवश्यकता है. 25 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता. Flighted delivery and Babita. Oh my goodness. Oh my goodness. Yes, Babita stays back. Rightfully, I think it will be a fitting finish for the team if Babita clears this and clears the match-winning runs by herself, because the kind of start that she had given, that was really mind-blowing. So I think if Babita hits the winning runs by herself, that would be a fitting finish. Tripti, the bowler. And the first ball has been played on the leg side. And Babita strike for a single. 2 chances was there for Amol, running from the deep mid-wicket region. At the striker's end, that could have been a wicket. 2 runs to win. And at the striker's end, could have been a chance this time. And that's played on the leg side. Babita runs and runs for a single. 1 run to win. Can Babita finish this match with a hit? Can she clear the winning runs?